There's news, there's sense, and there's nuisance. This show is all about that last bit. As we record this show, the second wave of the coronavirus pandemic is continuing to devastate India. On Wednesday, India reported over 4.12 lakh new cases. Close to 4,000 people died in one day. India has recorded 3.49 million active cases. 4 News Laundry reporters are on the ground in Uttar Pradesh, bringing us pictures of death and despair. भर्ती के लिए जब निकला तो कहीं न ऑक्सीजन मिल रहा था, न कहीं बेड मिला था। कहीं ऑक्सीजन मिले तो बेड नहीं, बेड मिले तो ऑक्सीजन नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल में और सरकारी हॉस्पिटल में जब शाम हो गया, ढूंढते ढूंढते पूरा गोरखपुर में हम लोग छान मारे उनको लेकर के, तो गोरखपुर गए। वहाँ वेटिंग चल रही थी 370 कोविड वाले में। Ajay's wife blames the government for his death. Grief has taken its toll, and their 3-year-old daughter Saras still doesn't know that her father will never come home. स्टाफ कहता है कि लो हम बंदोबस्त कराते हैं, सिर्फ पैसे होने चाहिए पास। सर ले लिए हमारे से भी जो लेना था, 2000 रुपये लिए हमारे से भी। ऑक्सीजन मिला 1000 हमारे बाजू वाले, 1000 मेरे बाजू वाले ने दिए और 1000 मैंने दिए। 2000 रुपये देके हमने सिलेंडर लिया। मेरा नाम कमल छाबड़ा है सर, माधोपुरम का रहने वाला हूँ, मेरठ का ही। Seeing a total collapse of governance, naturally people are angry at the government. सुपर पावर सुपर पावर सुपर पावर, ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे, काहे के सुपर पावर हो आप? कोई सुपर पावर नहीं है, सुपर पावर नहीं है। तुम साले एक नंबर के, मुझे मिल जा बस। अब क्या कहूँ मैं आपसे भाई साहब, ये मेरे सामने ये इक्विपमेंट है, ये लग नहीं पाया। सोचने की बात है कि टीवी न्यूज के स्टूडियो तक इन लोगों की आवाज कब पहुंचेगी। शायद तब जब सरकारी भोपुओं का शोर थोड़ा कम हो जाएगा। Only ask one thing. Does the government at the center, does Narendra Modi have to do an Agni Pariksha every single day, thrice a day to prove that he is working for every single Indian? Why do we question and suspect everything that he does? सही कहा नविका, कितना करेगा बेचारा एक अकेला पीएम। When this is the state of India's largest news media house, तब पीएम को वैसे टेंशन क्यों होनी चाहिए? अग्नि परीक्षा की तो कोई जरूरत नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर तो खड़े हुए हैं। By the way, I love the headline of this show. It says, "Where is the COVID aid going?" asks opposition and the rest of the nation. If the rest of the nation is asking this, maybe times now it's good to understand why. Close to 300 tons of foreign assistance arrived at the Delhi airport on April 28th. Note these dates. The emergency COVID-19 relief supplies had oxygen concentrators, oxygen cylinders, and remdesivir injections. But a scroll report published on May 3rd said that this relief has still not reached states. From April 28th to May 3rd, we didn't know what was happening with it. मतलब 5 दिन तक ये emergency सामान का क्या हो रहा था किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन जिन लोगों को इसकी ज़रूरत थी, वहाँ तक ये सामान नहीं पहुँच रहा था। After the scroll story, central government issued a statement on May 4th saying that the material had been dispatched to 31 states and union territories. And the statement also added, all possible attempts have been made to distribute them immediately. आगे की कहानी आप हमारे अनऑफिशियल स्पोक्सपर्सन को शाम को प्राइम टाइम में सुन लीजिएगा। Presenting May 4th Times Now Prime Time News. Times Now's internal security editor Nikunj Garg has accessed the files relating to the government's distribution of this material received from critical medical equipments like ventilators to the normal medical consumables like PPE kits. People should go and do the research whether those states, whether those recipients have actually received the same quantity or not, and then challenge the government. That is the whole business of playing the roles of checks and balances to a government. Times Now playing the role of checks and balances. I've seen it all. Only on the basis of the fact that the government has not come out with a statement and besmirching or trying to besmirch at least the reputation of the government in the foreign capital based on something that you think is the reality is
absolutely shameful. As I've been saying, I am usually a skeptic, taught by years of my training in the profession. I usually do not believe the government very, very easily. You are a skeptic? Navika इस पे तो कुछ बोल देती. After the scroll story was published on May 3rd, opposition leaders like Mr. Khera and Mr. Owaisi asked questions on where exactly this aid was and how were state governments going to get it. आप chronology समझ लीजिए. The story was published on May 3rd on Scroll, and on May 4th, after the government of India is forced to release a statement because of good journalism and alert opposition, Times Now does a show on May 4th saying, आप क्यों सवाल पूछ रहे हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से? वो दे तो रहे हैं जवाब, पहले देख तो लो क्या बोल रहे हैं. Let's all be mature individuals, mature adults, and mature political analysts and politicians like yourself. Let's just look at it that when this aid comes, it's coming from a foreign country. There is a sanitization process, there is a checking process, and following that, the distribution process. Now to say, shift the goalpost. पहले कह रहे थे देते नहीं है, अपने states को देते हैं, अब कहते हैं कि देर लगाते हैं. कमाल है. बहन नविका, you're giving answers on May 4th on behalf of the government of India, but the questions were already asked on May 3rd by journalists who were doing their job. So, stop saying don't ask questions of the government. Because when journalists question a government, they're forced to answer themselves or through proxy spokespersons. When some sections of the media themselves become government propaganda arms, then democracy is in trouble. And as long as these legacy media outlets depend on Sarkari ads, you can be rest assured that they will not serve public interest. Which is why we urge you to pay to keep news free. Go to newslaundry.com and click on subscribe. We have 4 reporters out on the ground, Ayush, Akanksha, Basant and Shivangi, bringing you what's happening from Uttar Pradesh. Unsurprisingly, this report of unused aid sitting at the airport was by Scroll.in. They also take subscriptions, so you can support them if you'd like to. Because if you were not going to pay, there will be no news left to serve you, or something like that. Meanwhile, Sudhir ji was doing the same old hera fairy in service of Modi ji. आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने पहले ही खतरे को भांप लिया था और राज्य सरकारों को इसकी चेतावनी भी दी थी. ये वीडियो आज हमने निकाला है, लेकिन इस पर उस तरह से अमल नहीं हुआ जो उन्होंने कहा था, जिस तरह से अमल करने की जरूरत थी, जिस तरह के कदम उठाने की जरूरत थी. हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा. Here's what Sudhir Chaudhary didn't tell you. This meeting was held in March because by then India's COVID tally was going. 3 states of Maharashtra, Kerala and Punjab accounted for about 75% of the cases at that time. So this meeting wasn't really about warning the states or giving them a chetavni. This was more like, guys, shit may be about to hit the roof. Maybe you want to talk about this a bit? Also, this spokesperson didn't give you the complete picture. Check out some of other PM's golden words to the CMs. कोरोना का जिस तरह मुकाबला किया है, उसका दुनिया में उदाहरण के रूप में चर्चा हो रही है. लोग उसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं. आज भारत में 96% से ज्यादा केसेस रिकवर हो चुके हैं. सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे. कई जगह देखने को मिल रहा है कि मास्क को लेकर अब स्थानीय प्रशासन द्वारा भी उतनी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही. And guess what he did after this? मैं जहां देख सकता हूं, मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है. Leading by example, एक महान आदमी ने बोला था, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है. Election results came out last week. By now you all know the results and you all know the winners. West Bengal obviously made top headlines because of TMC's spectacular victory and the dard and heartbreak this caused to some journalists. जी हाँ, अंत में खेला हो गया. Zee News in the run-up to the elections was basically BJP का personal प्रचारक, which shows like this. ताल ठोक के लाइव, मोदी शाह ने बदला बंगाल का गेम. हिंसा के तांडव के पीछे हार की हताशा. ये बंगाल है, ये पीके है और दीदी हार रही है. हैशटैग हार का क्लब हाउस. बंगाल में खेला हो गया. हैशटैग
दीदी का डर। नेचुरली दुख तो होना ही था। आपको याद होगा जब दिल्ली में चुनाव हो रहे थे और मैंने ये कह दिया था कि दिल्ली वालों ने मुफ्त की जो फ्री बीज थे, मुफ्त बिजली और पानी, उसके लिए उन्होंने वोट दे दिया, तो बहुत ट्रोलिंग हुई थी उस समय। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्री बीज हैं और जो माइनॉरिटी बेस्ड पॉलिटिक्स है उसे आप विकास के जरिए भी जीत नहीं पाएंगे। आज से ये नजर आ रहा है। और देखिए दिल्ली में वही बात हो रही है। दिल्ली की जनता ने फ्री बिजली और पानी के लिए वोट दिया था, उसमें ऑक्सीजन नहीं था, उसमें अस्पताल शामिल नहीं थे, इसलिए अब ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, अस्पताल भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि ये पैकेज का डील नहीं थी। ये सुधीर जी, कितना गिरना और बाकी रह गया है? सुधीर जी, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी हो रही है और क्यों हो रही है ये जानने के लिए आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं उसको थोड़ा फॉलो कीजिए। लाइव लॉ या बार एंड बेंच का ट्विटर हैंडल फॉलो कर लीजिए। यू विल बी अ लिटिल अप टू डेट देन। After the poll results, many incidents of poll violence broke out in West Bengal. This is the grim ground reality in West Bengal. The violence has claimed victims from across political parties. 20 people have died so far. Out of this, the families of 9 people have said that they were BJP supporters, while families of 8 people have said that they were TMC supporters. Of the remaining 3 victims, one was a member of the Indian Secular Front, another was a member of the CPIM, and another had no political affiliations. But if you saw the usual suspects, you only heard one side of this really messy story. क्योंकि ये हिंसा बीजेपी कार्यकर्ताओं और चुनाव में उसे वोट देने वाले वोटरों के खिलाफ हो रही है। क्या अब लोकतंत्र खतरे में नजर नहीं आ रहा लोगों को? सुधीर जी, लोकतंत्र तो हमें बहुत टाइम से खतरे में नजर आ रहा था। जी न्यूज देखते हैं ना, इसलिए। Just check out the tickers on his show. हिंसा के पथ पर दीदी का रथ। दीदी के बंगाल में लोकतंत्र या लहूतंत्र। पश्चिम बंगाल में खूनी खेला। चुनावी खेला खत्म, खूनी खेला शुरू। बंगाल नहीं, अब बदलापुर। Apart from Sudhir, BJP leaders and the pracharaks in media were using political violence to spread fake news. क्योंकि अगर आग लगी रही है तो थोड़ा घी भी झोंक देते हैं। TMC Muslim goons are beating BJP women workers in Kendamari village, Nandigram. #shame Mamta Banerjee, #shame TMC. Anand Narsimhan was trolling on Twitter and saw this and said, "चलो इस tweet का news बना देते हैं." What happened in Nandigram, where women workers in a village were actually brought out, BJP Karyakartas were molested, assaulted by Trinamool Congress cadre. That's what's being alleged. Yup, Narsimhan, that was being alleged. So best to check the allegation. Even small news outfits spend precious resources, do ground reports and then make claims. तुम ऑफिस में बैठे बैठे ट्विटर का वीडियो पेल देते हो। Are you a journalist or WhatsApp uncle? मुकेश भाई का पैसा कब काम आएगा? किसी को ग्राउंड पे भेज दो चेक करने के लिए कि क्या एलिगेशन है, क्या ट्रूथ है, क्या झूठ है। News Laundry was told by police officers stationed there that this video had nothing to do with political violence. All this fake news excitement got to India Today journalist and he also decided हम क्यों पीछे रहें। Again, the news of this particular incident of rape in Nanur was fake. Birbhum District Superintendent of Police Nagendra Tripathi called out the allegations as baseless. Remember that Tripathi has been a very critical voice against Mamta Banerjee. So basically, there was no evidence to these claims being made by Narsimhan and Kailash ji, so far at least. Make no mistake, the responsibility of stopping this violence is only and only with Mamta Banerjee. So we must ask her why we have lost 20 lives soon after she was elected to power. But we must base these questions on accurate facts without amplifying misinformation and giving these incidents a communal twist. Follow credible websites like yours truly because हमें किसी सरकार की सेवा में facts twist करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका contribution हमें आज़ाद रखता है तो हम सिर्फ आपकी सेवा में हैं। goldnewsonly.com, click, subscribe, pay, thank you. वो पैंडेमिक ही क्या जिसमें बाबा जी की अनवांटेड एंट्री ना हो। On a day when 3.82 lakh new cases of coronavirus were registered in India, this is what 2 of country's biggest news channels were broadcasting. डॉक्टर गुलेरिया जी से लेकर के तमाम बड़े बड़े डॉक्टर्स भी कह रहे हैं भाई ये पागलपन में रेमडेसिविर बहुत ज़्यादा मत लगाओ, बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड मत दो। ये शिलाजीत है, ये केसर है, ये तमाम तरह की जो सहजना है, ये गूगल है, लहसुन है, ये नेचुरल स्टीरॉइड का काम करते हैं।
नेचुरल एंटीबायोटिक्स, नेचुरल स्टीरॉइड और नेचुरल ऑक्सीजन जो परमात्मा ने दी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके उसको लो। ये पतंजलि बाम, इसकी पूरी लपेट लगा करके और मैंने प्राणायाम कराया और लोगों को हमने वेंटिलेटर पर जाने से बचाया। ऑक्सीजन से तो बचाया, आईसीयू से तो बचाया, वेंटिलेटर पर जाने से बचाया और लोगों के फेफड़ों को हमने फेल होने से बचाया। The day when close to 4,000 Indians succumbed to the virus, Aaj Tak and Republic had become tele-shopping channels running completely unsubstantiated claims by a man whose credibility has been quite well established in the last 1 year. Remember Coronel? Since the beginning of this pandemic, Baba Ramdev keeps making guest appearances as a doctor or a scientist, and Sadhguru has replaced mental health experts on all major TV news channels. The close-up shots of products, Baba's endless sales pitch go completely uninterrupted as anchors smile and ask questions like these. और बताइए कि हम ऐसा क्या करें, ऐसे कौन से घरेलू नुस्खे हों हमारे जिनसे हम कोरोना के खतरे से बच सकें, कोरोना हमें ना हो, हम उसकी चपेट में ना आ पाएं। कोरोना की चपेट में ना पाए, इसके लिए सुबह खाली पेट हमने ये अणु तेल दिया हुआ है। अणु तेल या पूरा सड़बिंदु तेल, अणु तेल या सड़बिंदु तेल या सुबह उठ करके सरसों का तेल नाक में डाल ले, खाली पेट स्वासारी ले ले, खाने के बाद कोरोनिल ले ले। Gharelu nuske and all is fine in normal times while dealing with a common cold or generally trying to be in shape or fit. We're in the middle of a full-blown pandemic. People are running from pillar to post for oxygen. Our healthcare system is crumbling. It's time you guys use your platform to ask questions that matter and not waste public का time on घरेलू नुस्खे. उस सब के लिए हमारे पास हमारी दादियां घर में हैं. That's all the nuisance we have for you this week. We'll be back next week. Until then, stay mad. That's the only way. Thank you so much guys for watching this episode. If you liked it, please like this episode. The previous episode, as I record the show, is around 800k. We would really like it to cross 1 million. So please like that video, share that video with as many people as possible so we cross 1 million. Please like this video, it's very important. As much as you like this video, the more you like this video, the more hits it'll get, and we really want to reach out to as many people as possible. So please like. Subscribe to newslaundry.com. Please check out all our ground reporting, all our videos by Basant, Akanksha, Shivangi and Ayush. They're doing some stellar job from Uttar Pradesh, so please watch their reports, promote their reports, share their reports, and of course subscribe to News Laundry because that's the only thing that keeps us going.